नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् लघुसिद्धान्तकौमुदीम्. In previous classes we have almost done Dvigu Samasa also, and Dvigu Samasa looks little bit difficult, and if we go sutra by sutra it is going to be go little bit difficult again. So what we will do, we will try to finish all samasa prakarana in simple way, then we will go sutra by sutra. So today I would like to introduce bahuvrihi samasa, dvandva samasa. So that is the last part of samasa, right? First we studied keval samasa, then avyayi bhava, then we started learning tatpurusha samasa. तत्पुरुषे प्रथमा द्वितीया तृतीया पंचमी षष्ठी सप्तमी, up to saptami we saw, and that was vyadhikarana tatpurusha. Vyadhikarana, where you will find the different cases in first pada and uttara pada, purva pada and uttara pada, that is vyadhikarana. Then we started looking at samanadhikarana, where purva pada as well as uttara pada also be in same case, right? So that was karmadharaya. Another name was given for samanadhikarana as karmadharaya. For example, nilaha megha, nila megha, nilaha also in prathama, megha also is in prathama. So that is called samanadhikarana karmadharaya. And after that we have studied dvigu samasa. Mainly here we need to focus on sankhya. Whenever there is a sankhya before in the purva pada, that might be dvigu samasa. Why I am saying that might be? Because in bahuvrihi also there might be some sankhya, dashanana, shadanana. Okay, so up to this we have seen. Now I will just introduce bahuvrihi samasa, and lastly we are going to learn dvandva samasa. And again, whatever sutras we have left, we will begin with that. Okay, let me introduce karmadhara now. Not karmadhare, bahuri samas, right? bahuri samas. अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहिः. अन्य पदस्य अर्थस्य प्रधानता यस्मिन् प्रयोगे भवति सः समासः बहुव्रीहि समासः. अत्र विशेष्यं किम्? अत्र समस्तपदं समासस्थितं पूर्वपदस्य अर्थम् उत्तरपदस्य अर्थं न बोधयति. In the sense, Purvapada and Uttarapada is not important. Means Purvapadam will not give the meaning of Samastapada, and even Uttarapada is not going to be. Anyam eva padartham athva anyam eva padasya artham bodhayati. For example, famous example you have to remember, Dashanana. Dasha or Anana is not giving the meaning. Okay, Dashanana agacchati, when we say Dasha doesn't come, and Ananam means face also doesn't come. But one who has 10 heads, the person comes when we say Dashanana agacchati. Right? So similar here, the meaning is explained. Purva padasya arthasya pradhanata nasti, उत्तर पदस्य अर्थस्य प्रधानता नास्ति, किंतु अन्यमेव पदस्य अर्थस्य अत्र प्रधानता वर्तते. Okay, so let's see this. Chakrapanim namami. You have to use, if you want to get the meaning, you have to add some kriya pada at the end of the sentence. So Chakrapanim aham namami, aham Chakrapanim namami. When we say this, we say we salute, we bow down. To whom? Chakram va अथवा पानी. Do we bow down to chakram or do we bow down to pani, hasta, hand? Not chakram also, not hand also, but anya padasya pradhanata. Chakram panau yasya sah chakrapanihi tasmin tam vishnum namamah khalu. So aham chakrapanim namami means I bow down to Vishnu, one who holds
chakram in his hand, that person I bow down, to that person I salute. Right? Another example. Pitam ambaram yasya sah pitambarah. When we say pitambarah agacchati, that time we need to question that sentence, that padam, whether pitam comes or ambaram comes. Okay, pitam also doesn't come, yellow doesn't come, ambaram is cloth or vastram, it doesn't come, right? But one who wears that yellow cloth, that person comes, right? So पीतांबरः आगच्छति means विष्णुः आगच्छति. अन्यपदस्य प्रधानता, पूर्वपदस्यापि प्रधानता नास्ति, उत्तरपदस्यापि प्रधानता नास्ति, किन्तु अन्यपदस्य अत्र प्रधानता वर्तते. ओके, नेक्स्ट अनदर वन. हतः रावणः येन सः हत रावणः. हत रावणः means what or who? रामः. रामः अयोध्यां प्रत्यागच्छति अथवा हत रावणः अयोध्यां प्रत्यागच्छति. The meaning of this sentence would be Rama comes back to the Ayodhya. Which kind of Rama? Who has killed Ravana. The Ravana was killed by whom? Rama. That Rama comes back to the Ayodhya. Hata Ravanah yena, hatah Ravanah yena sah kah Ramah. Okay. Now again there are types of samasa, bahuvrihi samasa, samanadhikarana bahuvrihi, where you will find Purva padam in same case, Uttar padam in same case. Pitam ambaram. Pitam is napunsakalingam ekvachanam, ambaram napusakalingam ekvachanam, and then you will be adding yasya athva esham, whatever you want to add. So that is called samanadhikarana. Vyadhikarana means there will be different cases. For example, chakram is in prathama vibhakti and pani shabd if you decline panau, hari, harau, saptami vibhakti. So that is called Vedhikarana Samasa. Purva Padam will be in some case and Uttar Padam also will be in some another case. That is called Vyadhikarana Bahuvrihi. Naya Bahuvrihi is very simple, as we studied Naya Tat Purusha. Similarly it goes, but here you need to add Yasya or Esham, whatever you want to add. Like Na Vidyate Dhanam Yasya Saha Adhanaha. So here particularly you are pointing a person who doesn't have wealth. Adhanaha. Okay. Saha Purvapada Bahuvrihi. Here what you have to put? Saputraha means what? Putrena saha vidyate. Putrena saha vartate iti saputraha. Saputra means what? A father. Okay. When we say saputraha, here means father. Okay. Then Upamana Purvapada, we are going to learn all these things elaborately, so nothing to worry about. Upamana Purvapada Bahuvrihi. Here you are giving some simile and then you are arriving at the meaning of some pada, right? Gajanana. Gajanana means what? Can you give the meaning of Gajanana word, any of you? Ganesha. गज मीन्स एलिफेंट. Gaja means जिसका मुख एलिफेंट जैसा है वो हाँ, गजानन. एलिफेंट के मुख जैसा है उसको गजानन बोलते हैं. एलिफेंट जैसा मतलब ऐसा यदि बोलेंगे, एलिफेंट के मुख जैसा, सॉरी ना, मतलब वो ही गड़बड़, हम भी यही गड़बड़ करते थे. गजस्य गजाननम मीन्स व्हाट वी यूज्ड टू थिंक. गजम इव आननम यस्य. हाथी के जैसे मुख है जिसका, लेकिन हाथी के जैसा मुख नहीं होता गणेश का. हाथी के मुख्य जैसा मुख होता है कि नहीं? तो हम भी वहां कंफ्यूज हो जाते थे. इसलिए मैंने ये थोड़ा, जब मैं ये वाला समास एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत अच्छी तरीके से एग्जांपल्स मैंने रखे भी है उसके लिए, तो देखेंगे. सो गजस्य आननम गजाननम. गजस्य आननम गजाननम तत्पुरुष वी हैव टू डू. देन गजस्य आननम इव गजाननम इव आननम यस्य सह गजाननः. Okay.
Now we'll study first one, samanadhikarana bahuvrihi. How will we know a difference? Gajasyanana and that is same meaning. Not same meaning, right? Gajasya hananam means Ganesha only. the face of Gaja. Oh, yeah. Correct. Ananam means face, and Gajasya ananam tatpurusha samasa. Samasa also differs, right? Yeah. Okay. But if the same Gajanana comes, we won't know which samasa it is in See, Gajanana means Ganesha only. But how you are doing Vigraha Vakya of that, I am focusing on that part. We should not say Gaja, she said, Nandini ji said, Gajam iva ananam. When we say Gajam iva ananam, it means इनका मुख गज जैसा होता है. गज जैसा मतलब संपूर्ण गज जैसा होता है क्या? नहीं ना, गज के मुख जैसा, हाथी के मुख जैसा. सो दैट शुड रिफ्लेक्ट इन विग्रह वाक्य. गजस्य आननम इव आननम यस्य. Again I will show. Okay, what I am pointing, if you remove this ananam word, then what would be the meaning? Gajam iva ananam yasya. गजम शब्द से पूरा का पूरा हाथी आ जाएगा. तो हाँ, गणपति का मुख, गणेश का मुख पूरे हाथी जैसा थोड़ी ना है. सिर्फ गज हाथी के मुख के जैसा मुख है गणेश जी का. सो व्हाट वी हैव टू से, गजाननम, गजस्य आननम गजाननम. गज का मुख, दो प्रकार के समास होंगे अभी देखो. गजाननम इसमें तत्पुरुष पहले होगा. गजस्य आननम गजाननम. गज का मुख, हाथी का मुख. उस मुख के जैसा मुख है जिस व्यक्ति का, उसको बोलेंगे गजानन. गजाननः we will be adding. In Tatpurusha, Ananam will, like you are going to make a Samasta Padam Gajananam. Because Ananam शब्द नपुंसक लिंग में है तो गजाननम बनेगा वहां. उस गजाननम जैसा मुख है जिसका, उसको बोलेंगे गजाननः. गणपति ही, गणेशः. अभी मुझे तो आपके चेहरे पे सारे डाउट्स ही लग रहे, या कुछ है क्लियरिटी? क्लियर है ना? ओके. और ये क्लियर होगा जब हम उपमान पूर्वपद पढ़ेंगे. ठीक है, अभी समानाधिकरण की ओर बढ़ रहे हैं. हाउ टू आइडेंटिफाई दिस समास? फर्स्ट पद, प्रथम पद वुड बी विशेषण एंड उत्तर पदम वुड बी विशेषम. Okay, here in this samasa, and that would be if it is ending with prathama vibhakti and visheshya padam also is ending with prathama vibhakti. Prathama is same, it is called samanadhikarana. Adhikaranam is samana. First pada also ends with prathama vibhakti, next pada uttar pada also ends with prathama vibhakti. So that is how it is called samanadhikarana bahuvrihi. And while doing vigraha vakya of this samasa bahuvrihi, we need to add either yasya, esham, etc. Considering the meaning in mind, we have to put yasya, yena, yam, yasmai, all the cases. Okay, so for example, pitam ambaram yasya saha pitambarah. Now pitam and ambaram, the both padas are ending with prathama vibhakti. That's why this samasa is called samanadhikarana bahuvrihi. Okay, so when we want to point out pitambarah, the person Vishnu, that time we will be adding pitam ambaram yasya saha vishnuhu, saha pitambara vishnuhu. Okay, so that is going to be samanadhikarana bahuvrihi. Okay, now again, if you don't want to point out a person, but if you want to point out the vastram which is yellow in color, so samasa is going to happen. There is going to be purva pada and uttar pada, and it is going to be karma dharaya. For example, pitambaram anayami. When you want to point out vastram, you would be saying pitambaram only. Okay, पीतम अंबरम पीतांबरम, that is going to be कर्मधारे. कर्मधारे में विशेष क्या होता है?
एक विशेष्य पद होता है, दूसरा वाला विशेषण पद होता है। पूर्व पद में विशेषण आ जाता है, उत्तर पद में विशेष्य पद में आ जाता है। हाँ, येलो कलर का क्लॉथ है कि नहीं? लेकिन वहां उत्तर पद की ओर ज्यादा ध्यान देना होता है कर्मधारय समास में। ठीक है, अंबरम शब्द नपुंसकलिंग में है, तो कर्मधारय समास में वो हमेशा नपुंसकलिंग में आएगा, है कि नहीं? पीतांबरम, राइट? बट in Bahuvri, what happens if you are pointing out a person, then lingam will change accordingly, gender will change accordingly. Now Pitambarah, if you want to point out Bhagavan Vishnu, it is going to be in Pullinga form, right? Pitambarah, Pitam Ambaram, Yasya Sah Pitambarah. If it is in Srilinga, how to say that same sentence? Pitam Ambaram Yasyah Sa Pitambara, right? Another word, Pitambari also sometimes they use with pratyaya, they add some pratyaya along with that to make Strilinga form. Okay, next. Kritam bhojanam ena sah krita bhojanah. If we want to point out a person who has eaten food, right, then we will say kritam भोजनम एन, जिसने भोजन कर लिया, वो वाला व्यक्ति, उसको समास क्या बन जाएगा? कृत भोजन। ओके, सिमिलरली वीराः पुरुषाः यस्मिन् सह वीर पुरुषः। अभी वीर पुरुष हम जब बोल रहे हैं तब उसका मीनिंग होता है वो गांव जिसमें वीर पुरुष रहते हैं। ओके, वीराः पुरुषाः यस्मिन्, यत्र वसंती, जहां रहते हैं, है ना, वो वाला प्रदेश, वो वाला गांव, वो वाला शहर जो भी है। तो वीर पुरुषः ऐसा कहने से क्या अर्थ मिलता है? जब हम बहुव्रीहि कर रहे तो ग्रामः, एंड दिस बहुव्रीहि ऑलवेज बी द एडजेक्टिव ऑफ समथिंग। ओके, पीतांबरः विष्णु, विष्णु इज द Pitambara is object, adjective. Krita bhojana is adjective of some person. Veera purusha is the adjective of village. Okay, next. Bahudhanam yasya sah bahudhanah. What is the meaning of this sentence? This samastapada? One who has lot of money. That person is called bahudhanah. Okay. Now here we are going to put dvitiya, tritiya, chaturthi, panchami, shashti, saptami. Okay, one example I will put, then later when we study samanadhikaran bahuvri sutra by sutra, then I will introduce that also. Praptodakah, udakam, you know, udakam is always in napusak linga. When you are making the adjective of a purusha pullinga form, then it will change into udakah. Praptam udakam yam sah praptodakah. What is the meaning of this? Any of you? Who get the Charanamrit? जी, Udakam means Charanamrit. no, udakam means any udakam, jalam. Praptam jal yam sah प्राप्त जलह, ऐसा कर सकते हैं, है ना। जिसको जल प्राप्त हुआ है वो मतलब कोई भी पुरुष हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, राइट। इफ यू वांट टू use word gramah, then we say प्राप्तोदकः ग्रामः, मतलब जिस गांव को पानी मिला है वो वाला गांव प्राप्तोदक कहलाएगा, है ना। So that praptam and udakam, yam is all in the dvitiya vibhakti. Praptam udakam is in prathama, so you have to focus on this visheshana and vishesha padam, that is going to be always in same case,
prathama, 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 everywhere you will feel fine. Then what padam you are adding, that you need to focus on. Yam, yena, yasmai, along with that. तो जो मीनिंग आपको वहां आप लाना चाहते हैं, आपकी क्या विवक्षा है, what you want to explain. Okay, so accordingly you need to put either yam or ena, yasmai, etc., etc. Okay. But yam is not prathama, right? Yam is like, I'm just trying to. This is dvitiyanta form. Yam, yena is tritiyanta form. Yasmai is chaturthiyanta form. This is how this bahuvri will be named. Dvitiya bahuvrihi, tritiya bahuvrihi. That is how it is going to be named. Okay. Next one. Hata danavah means what? Hataha danavaha ena sah hata danavah means what? One who has killed demons. It's called Hatadanavah. It might be Indra, he might be Bhagavan Vishnu, it might be anyone, Bhagavan Ram, right? So it becomes adjective of a person. Hatadanavah. Dattadhanaha. Dattam dhanam यस्मै सह, जिसको धन दिया गया है उस पुरुष को हम क्या बोलेंगे? दत्त धन है ना. तो याचक भिक्षुक कैन बी कॉल्ड एज दत्त धन. दत्त धन उपविशति मीन्स व्हाट? वन हु हैज रिसीव्ड धनम, ही सिट्स डाउन. नेक्स्ट पंचमी तत्पुरुष, पंचमी बहुव्रीहि समास. पतित पर्णः मीन्स व्हाट? पतितानि पर्णानि यस्मात् सह. पतितानि पर्णानि यस्मात् सह वृक्षः, जिससे पत्ते गिर गए हैं, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम? पतित पर्णः वृक्षः इति. I have a question about datta dhanaha. So yasmai saha datta dhanaha, yasmai, one who has received the money. Correct. By one, not by one who gave the money, by one who has received the money. Again, it depends upon your vivaksha. What you want to point out? If I want to say the person who gave the money. Gave the money, na? So it is going to be prathama, right? We have to think about prathama bahuvrihi. Dattah dhana. That's okay. I'm just I have to think. understanding it. Okay, I will. This datta dhana. What you want to ask, or you are asked. I will send you through, WhatsApp group. I have to think about right now. I am not getting. Panchami, patitani parnani yasmat saha patita parnah. Shashti, pitambarah, pitam ambaram yasya saha Vishnu. And next, veera purushah, veeraha purushaha yasmin saha gramah. Veera Purusha Grama. Veera Purusha is the adjective of that Grama, where Veera people stay. What you were saying, one who gives dhanam, there is going to be another samasa, not bahuvrihi samasa. Dhanadaha, upapad tatpurusha it will be. Dhanadaha, dhanam dadati iti dhanadaha. Right? Okay. So what about sahodara? Sahodara, it is avyay bhava. Okay. Okay. Now bahuvrihi samase kinchit linga vishaye kinchit jnatavyam bhavati, vachana vishaye kinchit jnatavyam bhavati. Sarve bahuvrihi समासाः त्रिषु लिंगेषु अपि भवन्ति. You can use any lingam, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है हमेशा. प्रसंगमेव अन्य पदार्थम आश्रित्य कर्तव्यम. फॉर एग्जांपल हतदानवः,
So here Hatha Danava you will find everywhere. Hatah Danava everywhere in Purva Pada, Uttara Pada. But next Pada, what Padam you are adding? Hatah Danava ena sah Hatha Danava. एन, यहाँ एन पद के ऊपर फोकस करेंगे तो वहां पुल्लिंग नाउन आ जाएगा लास्ट में. हतदानवः कृष्ण, जिसने राक्षसों को मारा वो वाला व्यक्ति कृष्ण हो सकता है, विष्णु हो सकता है, राम हो सकता है. बट इफ वी से हतः दानवः यया सा, इट माइट बी देवी. तो आप ऐड क्या कर रहे हो और आप बोलना क्या चाहते हो उसके ऊपर आप समास करेंगे. हतदानवा. ये क्षम्यताम, ये एन यया यही ये किसके रूप है? यत सर्वनाम हमने जो पढ़ा था, यह यौ ये यम, मतलब जो, उसका अर्थ होता है हिंदी में जो, जिसने, है ना. यह मतलब जो, यह यौ ये यम यौ यान ये न यभ्यम यही, ऐसा आपको हर एक पर डिक्लाइन करना है. सिंगुलर बोलता हूं मैं, यह यम ये न यस्मै यस्मात् यस्य यस्मिन पुल्लिंग के लिए. स्त्रीलिंग के लिए या याम यया यस्यै यस्याः यस्याः यस्याम, ये स्त्रीलिंग के लिए. ठीक है. तो जिन्होंने अथवा जिसने राक्षस को मारा वो लेडी हतदानवा. ओके, नेक्स्ट. हतः दानवः यया सा देवी हतदानवा. हतः दानवः यैः ते हतदानवाः. तो यहां ते पद यूज कर रहे, सह तऊ ते, मतलब वो लोग जिन्होंने राक्षसों को मारा. तो यहां कॉमन थिंग आपको दिखेगी, हतः दानवः, हतः दानवः, हतः दानवः, हतः दानवः, चारों सेंटेंस में, है ना. वो इसके लिए इन दोनों को क्या बोलेंगे? समानाधिकरण बोलेंगे. प्रथमा द्वितीया प्रथमा द्वितीया ऐसा नहीं है, हर एक पद में प्रथमा 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 प्रथमा, यहाँ सब प्रथमा है, इसलिए इनको समानाधिकरण बोलेंगे. यदि यहाँ चेंज हो रहा है, एक पद प्रथमा में है, दूसरा पद सप्तमी में है, तो वहां उसको बोलेंगे व्यधिकरण बहुव्रीहि. जैसे कि गदा पाणौ, गदा ये प्रथमा में आया, पाणी ये पद सप्तमी में गया, तो उसको व्यधिकरण बोलेंगे. अभी फिलहाल तो हमारा समानाधिकरण के ऊपर फोकस है. ठीक है. लेकिन समानाधिकरण के बाद हमारा फोकस अभी लिंग के ओर जा रहा है, लिंग और वचन. ठीक है. अभी पुल्लिंग का एक देखा, स्त्रीलिंग का एक देखा, ये बहुवचन का देख रहे हैं हम. हतः दानवः यैः बहुवचन, ते पुरुषाः हतदानवाः. तो हतदानवाः हम जब बोल रहे हैं तो यहाँ इसका मीनिंग क्या क्या हो सकता है? जिन्होंने जिन्होंने दानवों को मारा है. दे माइट बी वीर पुरुष, दे माइट बी देवास, दे माइट बी वानराज. You can use this word for anyone according to your vivaksha. Last one, hatah danavah yena tat. Now यही सेम शब्द यदि आप किसी नपुंसकलिंग शब्द के लिए यूज करना चाहते हो तो वहां क्या बनेगा? हतः दानवः येन तत्, तत्कुलम तद्गृहम, जिस घर ने दानवों को मार डाला, जिस कुल ने दानवों को मार डाला, वो वाला कुल भी क्या कहलाएगा? हतदानवम, है ना. तो यहां लिंग के ऊपर थोड़ा सा या वचन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है. ठीक है. विग्रह से वचन. I have a. Can you please show the previous slide, Avinash-ji? So the first one was Hatadanavaha, Krishnaha, right? Okay. So Hatadanava Ya Devi. Okay, let me put Ya Devi here. Okay.
That's what I wanted to know. Yeah. Okay. Hmm? So the first one will be Hatha Danavaha. The second one is Hatha Danava. Hatha Danava, it is Akaranta Strilinga form. Okay. How to put? Let me put this one after some here. Okay. Now, Krishna, you are getting the meaning. Krishna, Rama, whatever. Samasta padam is Hatadanava, Hatadanava. Then Devi is the Visheshya padam. What is called Visheshya in English? I don't. Adjective, and the person who is getting defined is called Visheshya, right? Okay. Subjective. Noun, I think. हाँ? Adverb. Adverb वो different होता है. Noun. Now, Noun is I need to find out the word for that also, Visheshyam. Now, here again, Vachanam Ashri, subjective. 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 not subject. विशेष्य के लिए मैं आपको बताऊंगा, कोई बात नहीं. Now, Vachanam. Prasanna Vadana. When we say, by saying Prasanna Vadana, actually you are not getting a Prasanna Vadana means who? Ganesha or Ravana. Then we need to look at the context. If the topic is going on about Ganesha, then Prasanna Vadana means Ganesha. If we are discussing Ramayana and Ravana is being described, then again we need to find out context. Okay, Prasanna Vadana can be Ganesha also, Prasanna Vadana can be Shadanan also. After at the, it is just adjective. Just by looking at adjective, we are not going to get the meaning. We have to look at Visheshya Padam also. Okay, one who is getting defined, उसके ऊपर हमारा फोकस जाना ही जाना है, तभी जाकर के हमें मीनिंग मिलेगा. Whether we are talking about Ganesh or Kartikeya or Ravana or any other person or Datta, whatever. So Prasanna Vadana means what? Prasannam Vadanam Yasya Sah, जिसका मुख प्रसन्न है वो व्यक्ति, वो चाहे गणेश हो, चाहे राम हो, चाहे विष्णु हो, कोई भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन अभी जिसके मुख बहुत ज्यादा है, प्रसन्नानि वदनानि यस्य सह, he might be Kartikeya, he might be Ravana. So we need to focus on, context देखना पड़ेगा हमें, है ना. तो समास प्रसन्न वदना ऐसा ही समास होने वाला है कार्तिकेय के लिए भी, रावण के लिए भी, गणेश के लिए भी, और जिसके 2 मुख है, जिसके 4 मुख है, जिसके 1000 मुख है, सबके लिए प्रसन्न वदन ऐसा ही विशेषण बनने वाला है. हाँ, ओके. विशाल नेत्र, विशाल नेत्र माइट बी एनी वन. नाउ जिसको 2 आंखें है उसका विग्रह, समास विग्रह कैसे करेंगे हम? विशाले नेत्रे यस्य सह, विशाल नेत्र जिसके 2 आंख है, बड़े बड़े आंख है, जिसके 2 बड़े बड़े आंख है, वो वाला व्यक्ति विशाल नेत्र कहलाएगा. नाउ इफ अ पर्सन हैज मेनी आईज, then what to do? Then we need to change just number of netram and the adjective. Vishalani netrani yasya sah विशाल नेत्र. करेक्ट. तो अब यहां विशाल नेत्र कहने से यहां भगवान शिव भी आ सकते क्योंकि उनके 3 आंख हैं. यहां षडानंद भी आ सकता है जिसके 12 आंख हैं. रावण भी आ सकता है जिसके 20 आईज हैं, है कि नहीं. तो विशाल नेत्र ऐसा कह देने से बहुत अलग अलग पुरुष आ सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, किसका टॉपिक चल रहा है. हाँ, किसी के भी लिए ये विशेषण यूज हो सकता है. ओके, अनदर वन. और जिसका एक ही आंख है तो वहां कैसे यूज करेंगे, समास विग्रह कैसे करेंगे? विशालम नेत्रम यस्य सह विशाल नेत्र, है ना. जिसका नेत्र विशाल है, जिसका एक ही आंख है और वो भी बहुत बड़ा है, उसको क्या बोलेंगे? विशाल. कोई राक्षस ना, कबंध करके राक्षस शायद रामायण में आता है, विशाल नेत्र.
Okay, after all, this is just adjective, so it might be, it can be used with anyone. Dirghakeshah, here दीर्घाः केशाः यस्य सः दीर्घकेशः। तो जिसके केश बड़े बड़े हैं उसको क्या बोलेंगे, उस पुरुष को हम दीर्घकेश बोल सकते हैं, दीर्घकेशी वगैरह वगैरह। समास में वचन का ज्ञान नहीं होगा आपको जब आप समस्त पद कर देंगे, लेकिन यदि आपको विशेष्य यदि क्लियर है, विशेष्य पद यदि क्लियर है जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उससे हम समस्त पद का विग्रह जब करेंगे तब हम अकॉर्डिंगली वहां पुट कर सकते। प्रसन्न वदन, यदि हम कार्तिकेय का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो उसका तो एक मुख नहीं होता, अलग मुख होने का कारण, बहुत सारे मुख होने के कारण प्रसन्नानि वदनानि ऐसा समास करेंगे। यदि प्रसन्न वदन शब्द यदि राम के लिए आ रहा है तो उनका तो एक ही मुख है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रसन्नम प्रसन्नः वदनः यस्य, प्रसन्नम वदनम यस्य, सॉरी नपुंसकलिंग शब्द है, प्रसन्नम वदनम यस्य सः प्रसन्न वदनः रामः। तो समास में समस्त पद में आपको लिंग का ज्ञान नहीं होगा, जब आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तब जाकर के आप विग्रह वाक्य अकॉर्डिंगली कर सकते हो, है ना। ओके, अभ्यासम कुरुत, विल फिनिश दिस विथ दिस क्लास। पराजिताः रिपवः येन सह, जिसने शत्रुओं को पराजित किया है ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? रिपु पराजितः न, प्रसन्न वदनम यस्य सः प्रसन्न वदनः ऐसा बोलते हैं, तो विशेषण हमेशा पूर्व पद में आ जाता है, समस्त पद में पराजित रिपु, पराजित रिपुः, करेक्ट। नेक्स्ट, दत्तम धनम यस्मै सह, क्या बनेगा? दत्तधनः। दत्तधनः, यदि स्त्रीलिंग में करते हैं तो यस्मै यहां विसर्ग नहीं होगा, हाँ सॉरी। यहां यदि ऐसा कर देते हैं, दत्तम धनम यस्यै सा,